तो फ्रेंड्स, माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है सबकी सुनो प्रोग्राम के लिए। और ये अक्टूबर महीने में क्या प्रोग्राम है, दिवाली आने वाली है, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और इस प्रोग्राम को एंकर करने के लिए मौजूद अपने प्यारे मित्र भारत भूषण जी, मैं उनसे आग्रह करता कि वो आए और प्रोग्राम का संचालन करें। भारत भूषण जी, धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ठीक है, तो MRL के सभी साथियों, आज के सबकी सुनो कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके अलावा विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर सेन गुप्ता सर का, जिन्होंने मुझे आज एक अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। साथियों, इंसान का स्वभाव जो है बड़ा विचित्र होता है। उसके मन में जब भी कोई विचार आता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो किसी न किसी के साथ शेयर करे। और वो शेयर दो तरीके से कर सकता है, या तो वो लिख करके करे या फिर वो उसको वर्बली करे। लिख कर करने के लिए वो डायरी, पेन, पेंसिल, बुक वगैरह इन सब चीज़ों का सहारा लेता है। लेकिन वर्बली कहने के लिए वो दो ही तरीके अपनाता है, या तो गद्य के रूप में या पद्य के रूप में। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें एक समर्पित लौह स्तंभ के रूप में डॉक्टर सेन गुप्ता मिले हैं, जो हम सब कलाकारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको एक मौका देखते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं ताकि वो अपने मन की भावनाएं प्रकट कर सके। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूं और सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और स्वागत करते हुए सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय NK अग्रवाल जी को, आए अपने मन के विचार रखें सबकी सुनो कार्यक्रम के अंतर्गत। आदरणीय NK अग्रवाल जी। धन्यवाद भारत भूषण जी। Am I audible? धन्यवाद सर। यस सर। Good evening everybody in the audience, and first of all my thanks to MRL and Dr. Sen Gupta for giving me the opportunity to share this platform with you. Then I thank Bharat Bhushan ji for giving me the opening batsman's opportunity. So let me see how successful I am going to be. So friends, I am going to share some life story, some details about one of the India's greatest mathematicians, Srinivas Ramanujam. Srinivas Ramanujam FRS was India's greatest mathematician and also recognized as one of the history's greatest mathematician. Srinivas Ramanujam was born on December 22nd, 1887 in Erode, India. His father was Kupuswamy Srinivas Iyengar. He worked as a sari store clerk, while his mother was a homemaker who sang at a neighboring temple. He attained his early education and schooling from Madras, where he was enrolled in a local school. When he was 15 years old, he obtained a copy of George Shoebridge Carr's Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics, 2 volumes. This aroused his interest in mathematics. In 1903, he secured a scholarship in the University of Madras, but lost it the following year because he neglected all other studies in pursuit of mathematics and failed. Ramanujam continued his work without employment and living in the poorest circumstances. After marrying in 1909, he began a search for permanent employment and then obtained a clerical post with Madras Port Trust. In 1911, Ramanujam published the first of his papers in the Journal of the Indian Mathematical Society. In 1913, he began a correspondence with the British mathematicians Godfrey H. Hardy that led to a special scholarship from the University of Madras and a grant from Trinity College, Cambridge. Ramanujam traveled to England in 1914, where Hardy tutored him and collaborated with him in some research. Ramanujam was awarded a Bachelor of Arts by Research, the predecessor of the PhD degree, in March 1916 for his work on highly composite numbers. Although he was almost completely unaware of modern developments in mathematics, his mastery of continued fractions
was unequaled by any living mathematician. He worked out the Riemann series, the elliptic integrals, hypergeometric series, the functional equations of the zeta function. He also worked out his own theory of divergent series, in which he found a value for the sum of such series using a technique he invented that came to be called Ramanujan summation. In England, Ramanujan made further advances, especially in the partition of numbers. His papers were published in English and European journals. And in 1918, he was elected to the Royal Society of London. Ramanujan wrote more than 3,000 theorems, approximations to pi and modular equations, and worked mostly in the subject of number theory. Ramanujan left behind 3 notebooks and a sheaf of pages, also called the Lost Notebook, containing many unpublished results that mathematicians continued to verify long after his death. Ramanujan returned to India in 1919. At 32, Ramanujan died at Kumbakonam, India on April 26, 1920 of hepatitis, hemoptysis, and intestinal ailment. In 2011, on the 125th anniversary of his birth, the Indian government declared that 22nd December will be celebrated every year as a National Mathematics Day. Then Indian Prime Minister Manmohan Singh also declared that 2012 would be celebrated as National Mathematics Year and 22nd December as National Mathematics Day of India. The stamps picturing Ramanujan were issued by the Government of India in 1962, 2011, 2012, and 2016. Ramanujan Day was observed by several reputed institutions. A number of awards and prizes were created by many institutions. Ramanujan IT City Special Economic Zone in Chennai was built in 2011. Srinivas Ramanujan, 1887 to 1920, FRS, the man who reshaped the 20th century mathematics with his various contributions in several mathematical domains, including mathematical analysis, infinite series, continued fractions, numbers theory, and game theory, is rightly recognized as one of history's greatest mathematicians. Thank you very much and Jai Hind. थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने बहुत ही सुंदर, सरल और सहज शब्दों में रामानुजम जी के बारे में हमको इतनी जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। मुझे आशा है सभी लोगों को इससे बड़ा फायदा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। Thank you very much. Thank you very much. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करता हूं एस कुमार जी को, कृपया आएं और अपनी प्रस्तुति दें। एस कुमार जी। धन्यवाद भारत भूषण जी। प्रणाम सर। Good evening everybody, all my MRL family. Advanced Diwali wishes to everybody in the family. Thanks to Dr. Sengupta Sab giving me another opportunity to speak in Sab Ki Suno. Today I am going to share an incident which happened in 1912, which is a real incident, which was a famous incident. This is about the ship Titanic. The Titanic, everybody knows it. It was on the way and it got sunk in the ocean. There were 3 ships around nearby when the Titanic was sunk. One of the ship was Samson, which was only 7 miles away from Titanic. And the captain saw the flames, but that ship was hunting illegally the seals and the ships and everything, fishes. So that captain turned away and he turned and went another direction. He did not come for help. This ship actually represents many of those of us who are busy in our daily life, and we don't recognize the importance and the need of the emergency of the other people, and we turn away without helping them. There was another ship which is only 14 miles away from Titanic, and that ship was surrounded by ice fields and everything. That captain also noticed the flames of the Titanic and was wondering what to do.
But he said, if I go in the ice fields, I will get caught. So he also turned away. He did not come for any rescue. He decided to go back away, a little more away from the ship. And next day morning, he got up and convinced himself that nothing has happened. He convinced his crew that nothing had happened. This ship actually represents some of us who say, "Oh, the conditions are not suitable now to help. If there were better comforts and better opportunities, I can always go and help." And we shy away from without helping. There was yet another ship, Karpathia. This ship was actually headed in a southern direction, very much away from Titanic, 58 miles away from Titanic. And this captain saw the flames. He decided to kneel down, bow down to the God, did his prayers, and immediately ordered the crew to turn that. He turned around. He came in another towards Titanic direction and wheeled, steered around the ice fields, which are all, surrounded by many of the ice fields. He just went ahead, and in full steam he went ahead and helped the Titanic. And out of the 1,200 passengers, he saved 705 passengers of the ship. This ship, Karpathia, was called hero of the Titanic that time. And 700 survivors, if for Karpathia, nobody would have survived in the ship. This was the actual story which happened in April 1912. And there is an interesting fact here is this RMS Titanic and RMS Karpathia are rivals. They don't see each of them. They don't talk to them, those two companies and everything. But this Karpathia captain decided to help and saved these 705 passengers. I just want to draw analogy in this is that obstacles and reasons to avoid responsibility always come handy to everybody. But if we overcome this and venture to accept the responsibility and go ahead to help, then we go down in the history, remembered forever, remembered by everybody, by the world, for the good of the world. So we all could be Karpathians in life. Then this world could be very more beautiful place to live, and as it is meant for them. If we shy away from these responsibilities, we will be only grumbling, the world is not good, the world is not. I just thought this is a real incident which can bring some moral to us. So I thought I am sharing this story to you. Thank you very much. भारत भूषण जी आप म्यूट है, आप म्यूट हैं। हेलो। या ठीक है अभी। सर आपने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को बहुत ही शानदार, सरल और सहज तरीके से हमें बताया, हमारी जानकारी में वृद्धि की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और सादर नमन। धन्यवाद सर। धन्यवाद। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय जीएस सलूजा जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया वो आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय जीएस सलूजा जी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर। Thank you to Dr. Sengupta who has provided me to participate in this program. Now I start my talk. This is the story about how 25 paise deposit could create largest bank in India and transform the entire scene. Nobody can imagine that it can be possible, but one man did it in his lifespan of 80 years. We will talk about the man little later. Now talk about story. The name of the man come later. This is the story of a young man who went to Bangalore to study medicine. He excelled in his studies, and when earning his license to practice medicine, he went back home to the fishing village of Malpe.
he asked his parents if he could go abroad for further studies, but was told sternly by his mother that he should stay in the same village and practice medicine for the welfare of the people he grew up with. That broke the boy's heart. He wanted to study more, and he knew that a fishing village would provide him neither money nor intellectual challenge. He was proved right. In 6 months' time, he confirmed that a fishing village had only colds, fevers, diarrhea, dysentery, and indigestion as regular ailments. He tried persuading his parents one more time to let him go overseas for further studies. Once again, he was revoked. Till one day, he had his eureka moment. He realized that one reason why he was not earning enough was because the people around him were also not earning enough. Could he change that? He began strategizing a social revolution that India had never seen or imagined. He knew as a doctor that children are brought to doctors invariably by mothers, seldom by fathers. So he focused on the women who come to him. He began urging them not to let their children end up like their fathers, who were good in only for fishing and then getting drunk when they returned to home base. The cleaning of the fish, selling them, managing provisions, balancing incomes with expenses was left to women. If there was any surplus money, the men demanded it and got drunk with that money. So he urged women to save, but they told him that there was not enough money for saving. He would then ask them to show how much money they had. They would show him a few coins. He would gently take a 25 paise coin from each woman and tell her to start with this. Since he was not a bank, he kept two notebooks for, for each woman. One kept with him and the other with the woman. He told them that he would send his compounder over to her house every day when the husband was not around. If they could save 25 paise, the amount could be registered in both the notebooks. The scheme backed by constant persuasion, exhortation, and worked. Women began saving. In a few months, he realized that he had more than 1,000 rupees, which translates into a few lakhs using today's valuation. The 25 paise deposit scheme came to be known as the pygmy deposit scheme. It was time to go to phase 2 of the plan. He told them that their children were falling ill very frequently because they consumed only fish and rice. He urged them to give the children a glass of milk every day. That was impossible. A glass of milk was unaffordable. So he urged them to buy a cow for their houses. They laughed. We cannot afford a glass of milk, and you want us to buy a cow. But he gently told them that he could finance the cow for women, and repayment was also painless. He explained, just give your child a glass of milk, and I shall purchase the rest of the milk from you and adjust the cost of the cow. You don't have to do anything else.
It took a while to persuade the first woman, but when she agreed, it was a game of me too. Within a short time, there were so many cows in the village that he could not purchase all their milk. He therefore formed a milk cooperative, and that is the largest milk cooperative, North Canara Milk Cooperative. To handle the amount of money coming in, he started a bank, Canara Industrial and Banking Syndicate Limited, with its headquarters in Manipal. The first branch of bank started its operations in 1925 at Udupi in Karnataka. By 1937, it had secured the membership as a clearing house in Mumbai. We then started Weavers Cooperative, who too were financed by the bank. Then, to benefit the community, he began schools, then colleges, and then institutions that taught engineering and medicine. This complex that later became the prestigious Manipal Education Complex. And this bank he started very soon became Syndicate Bank, which everyone known today. In fact, to grow the bank, the man used to look around for good businessmen who had the urge to grow and both the ability and the willingness to repay the amounts borrowed. In one of his travels, he met a trader whom he helped get a yarn license from the government. That businessman was Dhirubhai Ambani, and the doctor's name was Dr. Konse Madhav Anant Pai, Dr. T.M. Pai. That is how a member of Pai family remained on the board of Reliance Industries as long as Dhirubhai was alive. This bank grew bigger and became large enough to become one of the 12 largest banks in India. And that is how it got nationalized in the first round itself in 1969. And on 23rd August 2019, to end the bank and merge it with Canara Bank. Syndicate Bank does not exist anymore. This is the story of the man, Dr. Konse Madhav Anant Pai, who built the bank with 25 paise. Thank you. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पई के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने सुंदर, सरल और सहज शब्दों में जानकारी दी। आशा है हमारे सभी साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं विजय लक्ष्मी डी जी को। विजय लक्ष्मी जी को कृपया आए। विजय लक्ष्मी जी। Yes, I'm there. नमस्कार मैडम। Namaste. Why I'm not coming there? Yeah. Okay. I'll just start mine. I don't know why I'm not coming on the. Okay. Hello. Yeah, thank you very much. Welcome, madam. Thank you very much, Bharatji. And good evening to everyone, Dr. Sengupta sir and Santali and all my MRL friends. Thank you, Sengupta sir, for giving me another opportunity to speak in Sab Ki Suno. This is actually, I'm sharing a story. Today, I would like to share a small article which I had read recently about a little girl. Yeah, okay. A postman knocked on the door of a house saying, letter.
a childlike voice came from inside, "I'm coming." But the person did not come there for 4 to 5 minutes elapsed. Finally, the angry postman yelled again, "Hey, please come quickly and take the letter." The childlike voice again said, "So put the letter under the door. I'm coming." The postman said, "It's a registered letter which needs acknowledgement, so you need to sign." After 10 minutes, when the door opened, the irritated postman was speechless. A little girl with no feet was kneeling in front of him to pick up the letter. The postman delivered the letter quietly and went back feeling sorry. It went on like this for days. The postman got used to waiting till the door was opened whenever he had to deliver a letter to the girl's house. Diwali was fast approaching, and the girl noticed that the postman was always barefooted. So, once when the postman came to deliver the post, the girl quietly measured the postman's foot size from the footprints on the floor. Just before Diwali, the girl told him, "Uncle, this is a gift from me to you on Diwali." The postman said, "You are like a daughter to me. How can I take any gift from you?" As the girl was insistent, the postman took it home and opened the packet. His eyes filled with tears when he saw a pair of shoes, because during his entire service, no one had even noticed that he was barefooted. The next day, the postman reached his post office and pleaded to the postmaster that he should immediately be transferred to another area. When the postman asked the reason, he told him everything and said in tears, "Sir, after today, I will not be able to go to that street. That little girl saw me barefoot and gave me shoes. How will I be able to give her feet?" Sensitivity to perceive others' pain, experience and share their pain is a human quality without which we are incomplete. Being human is human being. Thank you. Thank you very much for giving me. मैडम, Yeah. ये जो कहानी है ये मैंने भी पढ़ी है, बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है, एक महत्वपूर्ण संदेश देती हुई। आपने बहुत शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। साथियों, अभी हमने अपने अनेकों कलाकारों के मन की बात सुनी, सबके सुनो के प्रोग्राम के अंतर्गत। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए एक सवाल अपने सभी साथियों से पूछता हूँ कि जब नेताजी ने देश को एक नारा दिया था, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा", और ये नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि नेताजी ने एक और नारा देश को दिया था, वो बताएं? तब तक मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय JL चौधरी जी को, आए और अपने विचार रखें। आदरणीय चौधरी जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं। चौधरी जी नहीं है अभी। चौधरी जी नहीं है? चौधरी जी नहीं है। चलिए फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय पद्मनी किनी जी को। पद्मनी किनी जी। Thank you, sir. I am Padma Kini. My name is Padma Kini, actually. अच्छा, Can you सॉरी। hear me? हाँ, नमस्कार मैडम। Okay. Good evening, everyone. Very nice to see you all today. I'm Padma Kini from Manipal, Udupi. I was just fascinated by Dr. T.M. Pai's story today. Very nice. It was very nicely, narrated. Now, I would like to share an incident which happened in the year 1984-85 when we just moved to Lucknow. My husband was working in Lucknow for some time. My son was 8 years old, and then my husband's office was in Hazratganj, and my son's school was in Kapurtala, and our house was in Aliganj, 3 places.
Mobile phones were out of question. Landline yet to get. Landline was not there. We just moved in, right? I thought of getting few basic things to start our living there, like buckets and kitchen appliances. Once they left to office and school, I started my program of exploring the city. We used to get tempos to commute in which 10 people can travel those days. I hopped into one of the tempos, which took me to the main area of the city. And I was in my 20s that time, not at all much experienced in life. My intention was to get basic things only, getting some basic things like kitchen appliances and buckets and all. It was in my mind, nothing else. I did my shopping and my both hands were full of things bought. Now I took a tempo which goes to via Aliganj. While returning, he stopped me near the main road and said he will travel further and will not turn towards Aliganj. Okay, I got down and I was just thinking, what next? Suddenly, fear gripped my temples. Realizing I do not have the landmark or location of my house, we were just new there. I didn't have any, landmark or location of my house. So I was just panicked. I started walking towards another tempo stand, and there I stopped the tempo. He asked me my destination, where you want to go. I suddenly remembered our watchman had saying, there is a Kabristan behind our house. So I said, Kabristan ke paas jao. He just stared and looked at me top to bottom without uttering a word. He just started his tempo and left fast. I was just flabbergasted. Arey, what happened? Later, I realized I was in white sari with my hair left loose. He must have connected my sari to the Kabristan. That was very funny. Now I started walking a bit with luggage. I could see a person in front of me with veggies walking, and tomatoes were falling when he was walking. I went fast and informed him that his vegetables are falling. He just stared at me and ignored, and I was just left wondering what happened. By then, I saw a cycle rickshaw. I stopped it and climbed it, thinking at least this one will only move around Aliganj, so somehow I can get my house. Suddenly, I remembered Bhainswala Tabela just opposite my house, who was from Nawab's family actually. Once upon a time, his ancestors were Nawabs. So I just requested the cycle rickshaw fellow to take me to any Bhainswala around that area. Back of my mind, I was planning to get down from the cycle rickshaw and enter any house with family to take help as street lights started getting on. 6 p.m. it was. I was panicked and fear gripping my temples, spine chilling, stomach churning, thinking if I do not find my house, what next? Also thought of taking 10 rounds of our Ananteshwara temple Udupi built by Pandavas. Praying God for my safety, I made my breath steady and tried to remain calm. By then, the cycle rickshaw reached the Bhainswala, who was just opposite my house, and I took a sigh of relief, and with a big smile, I entered my house. It was a great experience of my life. I hope you liked it. The moral is those on board with the Lord always arrive safe to their destination. I thank Dr. Sengupta sir and Samatadi for giving me this opportunity in Sab Ki Suno Zoom event of today. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू मैडम। आपने अपने जीवन का अनुभव बहुत ही सुंदर, सरल और रोचक शब्दों में बताया। बहुत अच्छा लगा और इससे हमारी जानकारी में बढ़ोतरी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैडम। साथियों, आगे चलते हैं और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक हरफन मौला कलाकार जो कि विविध कलाओं में पारंगत हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी विषय की तलाश में नहीं रहते। उन्हें कोई भी विषय दे दिया जाए तो वो अपना बोलने लगते हैं, और कभी ब्रेक भी आए तो किसी को एहसास नहीं होने देते कि कहाँ वो अटक रहे हैं। आदरणीय नवीन दुग्गल जी, मेरे गुरु जी। नमस्कार। आप सब मेरे प्रणाम गुरु सर। और मास्टर्स और टीचर्स और अम्मा, सब मेरे बुजुर्गों और मेरे बाजू वाले, आजू बाजू वाले और हमदर्द, हम सफर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये सब गाने सुने होंगे। एक दूसरा गाना था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, मतलब सब दुखिया सब संसार। और हर बार हम कहते पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हमारे इस उम्र में क्या तब्दीलियां आई हैं, स्पेशली हमारे ये जो कोविड के बाद हम लोग काफी लेजी हो गए हैं। तो हमने बोला एक किताब पढ़ते हैं, द आर्ट ऑफ लेजीनेस। लेकिन मैंने कहा व्हाई नॉट लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिवनेस। और एक्टिवनेस जो है आर्ट ऑफ लिविंग या हार्ट ऑफ लिविंग या आर्ट ऑफ एक्टिविटी, ये हमारा माई रिटायर्ड लाइफ हमें सिखाता है और सिखा रहा है। और सीखने वाले सीख जाएंगे, बाकी देखने वाले देखते रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मैं डॉक्टर सेन गुप्ता जी को बहुत बहुत और सारे टीम को, समता माँ जी को, सबको धन्यवाद करता हूं कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमने अपनी 100% नहीं तो कम से कम 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज की। फिर आया कंफर्ट जोन इज योर एनिमी। हम कहते दूसरों को है, लेकिन हम खुद हिलने नहीं चाहते। कल की एक वाकयात बता रहा हूँ कि एक मैं अपने लॉकर के लिए यूनियन बैंक में गया, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो मैडम जी हिलने को तैयार नहीं, कहते जी योर डॉक्यूमेंट्स आर इनवैलिड, यू कांट ऑपरेट द लॉकर। मैंने कहा हाय रे हाय, ये तो मेरे को हार्ट फेल हो जाएगा, मेरा माल पानी अंदर है। बिटिया बोले लेके आओ कुछ, अब मैं क्या करूं। वो मैडम हिल नहीं रही थी, तो वो बोलती है मौसी ए मामा उसको अपना फाइल दिखाओ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने कहा दिस इज अब्यूज ऑफ सीनियर सिटीजन because they don't know how to behave, because youngsters were not trained as per what 20 years ago, 10 years ago, even 5 years ago लोगों को पता था। It is not old people are asking any attention. Age due to listening skill and speaking skill and what we register is limited. That needs some more time and second to find out what is the problem and how, what is the solution or how can I help you. आजकल कोई हेल्प यू नहीं है, सबको लगता है मेरा भी कितना बड़ा पैकेज है, बस दैट्स इट। तो वो जो ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होने की वजह से हमें दुख होता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन पुराने जमाने में हमारे फादर, हमारे टीचर्स, अगर हम एक मिस्टेक करते थे इंग्लिश में या हिंदी में या संस्कृत में या मराठी में, तो हमारे कान फूटे जाते थे, मुर्गा बनाया जाता था या टेबल पे खड़ा कर देते थे। आजकल का क्या जमाना है, कोई बड़ा बात करता है, मिनिस्टर का बेटा हो ना, सीधा बंदूक लेकर टीचर को उड़ा देता है। ये दिल्ली में और गुड़गांव में वगैरह वगैरह होता है, नॉट इन साउथ एंड नॉट हियर, थैंक गॉड वी आर सेफ। तो कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, हम लोग बहुत डिपेंड कर रहे हैं, अरे वो भाई आएगी कर देगी, खाना लगा देगी, लेकिन एवरीबडी नोज द हॉर्स हैज टू गो टू इट्स वाटर पॉन्ड और द वेल टू ड्रिंक द वाटर। अगर हम ही प्रयत्न नहीं करेंगे तो कहां से ऊर्जा आएगी। So what we have become lazy. I'm not saying blaming you. Come out of it. Let go. नहीं, leave those comfort zone sometime. हटके आओ। और फिर आता है work on the right things. अभी हम क्या करते हैं, हमारे ग्रैंडसन क्या कर रहा है, वो अमेरिका में क्या हो रहा है, न्यूज क्या कह रही है, बाजू वाला क्या कह रहा है, पानी नहीं आ रहा है, एयर कंडीशन नहीं चल रहा है। अरे कभी कभी ऐसे एक टेबल के ऐसे हवा तो मारना सीखो, तो हाथ पैर तो चलाओ। वहीं बैठे रहेंगे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये काम मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत लोग नाराज होते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड माय लेवल, क्योंकि मेरा दिमाग, दिल तो पागल है दिल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्रिएटिविटी कम्स आफ्टर दैट, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर आता है डोंट बी ए परफेक्शनिस्ट। हर जना कहता है मैं 10 बार गाना गाऊंगा तभी मेरा भाषण आएगा अच्छा, या गाना अच्छा आएगा। मैं कहता हूँ जो बोल दिया दैट इज योर आइडियल परफॉर्मेंस।
ये देखो कि पिछली परफॉर्मेंस से आगे जो करो तो गलतियां ना हो, डिले ना हो। और इसके लिए मैं डॉक्टर सेन गुप्ता जी को और मैडम को, कृष्णेवी अय्यर, सबको ये कहता हूँ, और इवन भारत भूषण जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सेंसर कट, टाइम झाला, कट कट, नवीन जी ऐसा वाला डायलॉग नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो शार्पनेस, चाहे हमें वो टाइम में निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुपाए, आज के जमाने में बिन शैम्पू बिन मेकअप टेकअप में नेचुरल को सुभाए। मतलब हम सुधर जाएं, मगर हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। फिर उसके बाद डोंट बी द मीडियोकर। अगर मैं कहूँ अरे एक जमाने में कर्नल था, मैं ये था वो था, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन यू, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर। व्हाई नॉट वी स्पेंड अवर टाइम टुगेदर, आंखों में आंखें देखकर डांस करे, या दिल आया तो कुछ गुलाब जामुन नहीं तो कम से कम पानी पूरी तो खा लो, पुचकियां मारो, करो, बोले मजा आ रहा है, चाहे मुंह से शर्ट खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मजा तो लो उस जमाने का। इतना हम डर डर के नहीं नहीं, आई कैन नॉट, आई यूज्ड टू बी टोल्ड लाइक दैट। अरे गेट आउट ऑफ दैट बैरियर्स एंड द माइथ ऑफ मल्टीटास्किंग। हर बच्चा बोलता है अमेरिका में, इंडिया में, आई एम बिजी, आई एम वेरी बिजी। छोटा सा बच्चा है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं गलती से, वो मोबाइल दे देते हैं और फिर बोलते हैं हमारा हमारा हम फ्री हो गए। अरे बाबा, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन बिकमिंग ए स्लेव ऑफ दैट सिचुएशन। बी लिबरेटेड, बोलो तथास्तु, फोन बंद करो, बाद में बात करो। ये हम एम्फोसाइज ही नहीं करते घर में या कहीं भी। और मेरे जैसा बोरिंग बंदा जो कभी बात नहीं करता है अभी आजकल, नॉट कि आपसे नहीं, बिकॉज मुझे डर लग रहा है हाईकमांड का, तो मैं सुधर गया हूँ। मैं नैन दो नैन, सुख चैन, और उसके हाँ, बाद चुप करके बोलता फिंगर ऑन योर लिप्स। अभी मुझे 3 मिनट दीजिए बहुत क्योंकि सुंदर। आज टाइम है। तो डेली रूटीन्स के अंदर एक छोटा गोल रखो। एक जो होता है नॉर्मल रूटीन, जैसे सुबह उठे, भगवान का नाम लिया, नहाए धोए, सब कुछ रूटीन हुआ। फिर आज की शाम नहीं, आज का दिन कैसे निकालेंगे। हर जना 3-2 का सुनता है गाना, आज की शाम रात है बाकी। अरे मैं बोल रहा आज की शाम है बाकी, प्रभु का नाम लीजिए। लेकिन हमारा क्या होता है, माइंड उस टाइम होता है अरे व्हाट्सएप में क्या आया होगा, वो दूध वाला आने वाला है, वो छोड़िए। टेलीफोन 10 बजे के बाद स्विच ऑफ, जैसे डॉक्टर साहब करते हैं और कई हमारी मैडम भी करती हैं, और सुबह 6-7 बजे खोलती हैं। दैट्स इट। और बीच में जब सोने के टाइम उसको एरोप्लेन मोड में रखो, ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो आपका स्लीप पैटर्न। उसके आगे है लर्न टू से नो। कई बार हमें क्या होता है, ये टेलीफोन आता है या कोई आता है, कोई ना कोई बोलता है, तो ये नहीं बोलना अच्छा अच्छा मैं आ जाऊंगी आपको खुश करने के लिए, बोले नहीं मेरी तब आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, सॉरी। इट इज बेटर टू से सॉरी देन टू वरी मोर लेटर ऑन। फिर उसके बाद आता है डोंट वर्क 24/7। अब इसमें क्या है, हम अगर एक ही जगह बैठे रहेंगे तो हमारे जो हड्डियों का और मसल्स का सब जाम हो जाता है। तो उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो योगा करो, मैडम ने हमें डांस मोशन थेरेपी दिया है, जुम्बा बुम्बा करो, कुछ नहीं तो भारतनाट्यम करो। अरे कुछ तो करो। कुछ नहीं है तो शीशे पे जाके अपना मुंह दिखाओ और फेसेस बनाओ करके, फिर देखो आपको कितना फनी दिखेगा। और वक्त का वेट ना करो। इसलिए कि आज मैं कहता हूं मेकअप, शेकअप, पैकअप, लेट गेट 1 2 3 एंड गो। तो हमें वो वाह, स्पोर्ट्स का जो टीचर बोलता था ना, सीटी बजाता था, रेडी स्टडी एंड गो। तो 1 2 3 मैं करने वाला हूँ। सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल। हमें पता है लेकिन हमें समझ नहीं है, हम फिर भी वही पब्लिक में जाते, वही रिश्तेदारों के साथ मिलते। मेक सम न्यू फ्रेंड्स, इफ नॉट गर्लफ्रेंड एटलीस्ट नॉर्मल पीपल। और फिर डोंट वरी अबाउट कल क्या हो, किसने जाना है, जस्ट डेलिकेट। और जो अगर तब्दीलियां आती, तकलीफ होती है, फाइंड वेज एंड मीन्स टू बी हैविंग ए ईज इन लाइफ। स्पेंड योर मनी। अगर आप चल के नहीं जा सकते, ओला उबर ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, या किसी और को बोलिए मेरे साथ चलिए। आस्क फॉर हेल्प एंड डेलीकेट। व्हाट डज डेलीगेशन मीन? हमने तो उनको बोल दिया, वो नहीं किया, पहले से हमने पहले नेगेटिव बात किया, उसने नहीं किया या वो नहीं करेगा। उसको प्यार से, उसको हमारे हिंदी में दिल्ली में कहते हैं जुगाड़। ये हर वर्ड में, हर लैंग्वेज में, मैंने आर्ट ऑफ स्पीकिंग नहीं सीखा था, लेकिन मुझे 40 साल के बाद आता था, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ ये बात कि डेलीगेट करके किसी और को डेलीगेट दे दो, कुछ उसको ऊपर से दे दो और काम कराओ।
और आगे एक ओपननेस रखो, ओपन माइंड विद माइंड सेट। अब जो लोग नहीं करते उसका क्या होता है, ब्रेन डैमेज क्यों होता है, वो भी मैं अभी एक लास्ट में, क्योंकि अगर टाइम है, 8 हैबिट्स दैट डैमेज योर ब्रेन। फर्स्ट इज स्टेइंग इन द डार्क टू मच, किसी को मिलना नहीं, आइसोलेशन, मैं मेरा, वो छोड़िए। पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, तो सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, जो आप लोग सब कर रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। एंड थैंक्स टू डॉक्टर सेन गुप्ता, हमें इतने लेक्चर्स हमारे एक्सपर्ट से करवाते हैं, काउंसलर से करवाते हैं। बेयरली मूविंग थ्रू आउट द डे, ये योगा डे हमने मनाया था, फिर हमने डांडिया रास इतना बढ़िया किया था, और गलती से मैंने पिछले बता एक मोड़ आया, मैं छोड़ आया, उसमें मैंने भी डांस किया था, चाहे दर्द हुई 2 दिन, लेकिन मैंने किया अपनी खुशी से। एंड थैंक्स टू डॉक्टर सेन गुप्ता, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसलिए ये वही हर एक का अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है। फिर कंज्यूमिंग टू मच ऑफ शुगर, अभी ये WWW हम रोज सुनते हैं, मैदा मत खाओ, पकोड़ा मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन हम अपने आप में पोर्शंस में क्या हमारी डाइट कंट्रोल करते हैं? क्या हमारे पास कोई डाइटिशियन है जो चार्ट देता है, उसके हिसाब से खाना खाते हैं और टाइम पर खाते हैं? दैट इज, और स्पेशली दिवाली आ रही है, आई विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स, बट भाई इससे बच के बचना है, हसीना, मैं बोला बचना है व्हाइट शुगर से या WWW से। फिर है कंज्यूमिंग टू मच न्यूज, avoid news and start reading, writing or anything, scratching on the, मतलब आपके टाइल्स हैं उधर भी ऐसे कुछ ऐसे लिखते जाओ, चित्र बनाते जाओ, उससे भी आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। और फिर सोशल आइसोलेशन में जरूरी नहीं है लोगों को मिलके पूछना तुम्हारा नाम क्या है, बिकॉज मुझे अपना नाम याद नहीं रहता, कई बार मेरा नाम नवीन दुग्गल है, मगर मैं क्या कहता हूँ, 3 अक्षर का है मेरा नाम, उल्टा सीधा है, हाँ पोएम बनाई है एक समान। इसके साथ मैं लास्ट जो कहना चाहूंगा, ब्लास्टिंग योर हेडफोन्स ऑन फुल वॉल्यूम, कम बोलो, कम सुनो, लेकिन अवेयरनेस से जियो। इससे लेट देयर बी स्माइल ऑन एवरी फेस एंड ब्लेस योरसेल्फ एंड ब्लेस योर कम्युनिटी। इफ इनर पीस इज देयर, आउटर पीस विल बी देयर। इफ इनर लव इज देयर, आउटर लव विल बी देयर। अच्छा, तो हम चलते, आज बहुत कह दिया मैंने, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद। बहुत शानदार नवीन जी, बहुत मनोरंजक तरीके से आपने कहा, मजा आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रणबीर कौर जी को। रणबीर कौर आदरणीय शायद नहीं रणबीर है, कौर, वो भी नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूँ। तो अब अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आदरणीय वीणा अय्यर जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय वीणा जी। नमस्ते, नमस्ते भरत भूषण जी। प्रणाम फर्स्ट मैडम। एंड फॉरमोस्ट प्रणाम। First and foremost, thanks to Sengupta sir for accommodated me at the last minute, and thanks to Bharat Bhushan ji for including me. And today's topic is also related like this only. What is family? आपके बिना अधूरा रहता है कार्यक्रम। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं. Let me just say what I want to say after that humorous talk of Naveen ji. This is a bit serious, not very also. What is family? Togetherness in good and not so good times, and having a head of the family keeping everybody bound together. In a family, you can be what you are. You don't have to pretend what you are not. और वो बोलते हैं ना, चेहरे पे चेहरा नहीं लगाना पड़ता है. And you are always encouraged, motivated, groomed, and not being judged for anything you are. That's a family. You are accepted as you are. Is it not the same with our MRL? Most of you will definitely agree. So I just want to share 2 experiences to prove this statement of mine. Once during our picnic, I had got a foot cramp, which you call it. It was very difficult to stand, sit or something, and quietly one of our friend, Rita Saxena, was so kind enough to give me her socks, gave massage to my foot. Imagine somebody doing that so close, and she was passing through her own grief moment. And that was very touching, and I don't think I'll ever forget that. And then
it became like I was traveling, international travel. We take wheelchair also to transfer from one central to at Bombay itself. It so happened our flight was cancelled after sitting in the aircraft for about 4 hours. And I was so fortunate to have our Chetan Deshmukh and his wife Bharti Deshmukh. They are not here today. They are still in Canada. It was such really a godsend gift for me. I don't know. I definitely panicked. I wouldn't be feeling shy to say that. It took time to stabilize, and we were all put up in a hotel. And so sweet of her to fire the assistant who was taking me by wheelchair after taking the luggage out again. We were supposed to take it out in spite of checking in. She fired him for leaving me and going. She brought him back, put me on the wheelchair, and till made him come to with me till the bus. And then after we boarded and rooms were allocated, very sweetly she said, "You don't worry, I'll sleep with you in your room." I was alone. And for me, unfortunately, for her, fortunately, they got a ticket on the same night, another flight. By the time we went to the hotel, it was the next day morning. Generally, international flights, midnight ka rehta hai. She felt so guilty, and then she said bye and all that, and she went. Till now, after reaching there also, she was in touch to find out what is my flight and what is my, how I am going, everything. She was so concerned. So these things, I'm just telling two incidences. I have had many. Like this, always our good friend Shams, they are coming to my aid at any time. So many people, each one of you would have noticed somebody is unwell, we phone and definitely inquire about each other and try our best. If not physically, at least digitally, we are connected with each other, finding out how they are doing in their own difficult times, which we may call. Many of us here will vouch that there is no space like loneliness in our lives, with people interacting with each other so much. For that, we definitely need to thank this platform, which I would call not my Retired Life Foundation, but my rejuvenating, lovely family. So that's what we have got, everybody here. So never, when we say MRL is a family, we definitely mean it. And everybody, each one of us have had some experience or the other. We are ever ready to receive help and help each other. Thank you. थैंक यू वीना जी। मैंने सुना था हाँ, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो आज लग रहा है आपकी बात से बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर। बहुत thank you. बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। Thank you so much, Bharat ji. साथियों, मुझे लगता है कि जितने कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देनी थी, शायद सभी का नंबर आ गया है। यदि कोई बच गया है तो एक बार मुझे बता दें, ताकि मैं अपना भूल सुधार कर सकूं। यदि कोई रह गया है तो, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज आपने हमारे एक से एक चुनिंदा कलाकारों के विचार सुने, और उन विचारों को सुनने के बाद मेरे मन में एक छोटा सा आइडिया आया है। वो जाने से पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा है बीना जी, बहुत छोटे में बोलूंगा, मैं नाराज मत होना। और वो आइडिया ये है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 3 का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। त्रिदेव, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवियां पार्वती सरस्वती लक्ष्मी, 3 नदियां गंगा जमुना सरस्वती, 3 लोक स्वर्ग लोक, भूतल लोक और पाताल लोक, 3 हमारे अवस्थाएं जवानी, बुढ़ापा और बचपन, 3 हमारे संस्था के, किसी भी संस्था के अधिकारी 3 होते हैं मुख्य रूप से, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष। इसी तरह से हमारे सेना जो है, सशस्त्र सेना, उसके भी 3 अंग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का, हमारे गौरव का जो प्रतीक चिन्ह है, वो है हमारा तिरंगा। वो भी 3 अक्षर से ही बना है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ 3 के अंक को महत्व दिया गया है। और शायद इसी बात को सोचकर हमारे पूर्वजों ने हमारे वैवाहिक जीवन को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला भाग है पति काल, जिसमें शादी होने के बाद पति बोलता है, पत्नी सुनती है
और ये काल बहुत थोड़ा होता है, छोटा होता है। दूसरा काल है पत्नी काल। इसमें पत्नी बोलती है और पति आज्ञाकारी प्राणी की तरह चुपचाप सुनता है। ये थोड़ा लंबा पीरियड होता है। और तीसरा होता है सबसे महत्वपूर्ण कलह काल, जिसमें पति और पत्नी बोलते हैं और अड़ोसी पड़ोसी मजा लेकर सुनते हैं। तो मेरी कामना है कि MRL के सभी साथी इन तीनों कालों से बचे और एक समर्पित और एक दूसरे से प्रेम करते हुए जीवन बिताएं, सुख में जीवन बिताएं, इन 3 कालों के चक्कर में ना पड़े। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज की प्रस्तुति में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो या किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं उसके लिए रियली आई एम वेरी सॉरी, और आशा करता हूँ आपका सभी का स्नेह मुझे प्राप्त होता रहेगा। और फिर मिलेंगे कभी, इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। आइए अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे। भरत जी, तब आपका तक के लिए क्विज का आपने आंसर नहीं दिया मैंने नेताजी का। तो आपसे मांगा था। नहीं नहीं, आप बताइए। इसका आंसर है चलो दिल्ली। अच्छा, ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। तो ये था मेरा दूसरा सवाल। और अब मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, सहा और सहन किया, इसके लिए नहीं नहीं आपका नहीं 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 नहीं, वेरी अभिनंदन, गुड। वंदन और सादर प्रणाम। आप सबको